Hello, everyone. I hope summers are treating well to you. काफी काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है हीट वेव्स के वो आ रहा है क्या कहना चाहिए वार्निंग्स आ रही हैं सो आई थिंक देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन इन द कंट्री so yes, I'm audible, I'm properly visible. Hello Rishparna, good morning beta. Okay, so let's have some newspaper analysis. Right, कि क्या चल रहा है देश दुनिया में. So like yesterday everything was around Iran versus USA, है ना. इनकी सीजफायर का कल लास्ट डेट था टेक्निकली. आज जब हम डिस्कशन कर रहे हैं सो सीजफायर इज ओवर. हाँ, that is what they are saying. And apart from this, the discussion was on Bengal election, the kind of what we can say campaigning happened, right? मत पूछो. कहीं अनुराग ठाकुर को मछली खाते हुए पकड़ा गया या he was eating fish on the Tuesday with a proper saffron cloth on around her around him his neck and with a proper tilak. Right, so people started criticizing him. His video went viral like anything. So I saw lots of different opinion talking about it. So that came out. Majority of people were telling or commenting on one particular thing. कि wait, vote के लिए कुछ भी करेगा. Right, and that is what happening actually. Election में यही चीज होती है. I mean, Bengal election is uh, like mess. अगर आप ध्यान से देखो. During this time, Manipur is running. Manipur violence is again like rising for negative reasons. And Manipur बंगाल से बहुत दूर नहीं है. But yes, our election campaigners, star campaigners जो हैं, they are not going to talk about Manipur. They are not going to go Manipur. All they are going to do is asking for votes. So Manipur issue was also there, and there are a lot of videos coming from there where there is a blast, violence, ladai jhagda, खून खराबा, injured people, right, and a lot of different things. So these were the major. Hi, Daksh, good morning. Major issues that were burning around the social media and Twitter and discussion platform. We never talk about TV media. TV media is still stuck into the Jhalmudi Modi ji ate at some place. हाँ, मतलब there is a star anchor who was telling the Indian public that there is 100 million view on that Jhalmudi video. I mean, think about it. This is a very important issue. Who ate Jhalmudi? Right. हाँ, मतलब भाई उसमें 100 million views हैं and that means 10 crore people have watched it, and this become a news for our news channel. So if you are watching TV news, I'll request you not to do this. This will rot your mind and दिमाग में negative virus जो है वो डाल देगा. So this virus actually kills your ability to think rationally. Right. And that guy is Harvard graduate. The Jhalmuri guy is Harvard graduate. I didn't know about it. You know, there are chances that he's graduated from Harvard and then he came back to sell Jhalmuri. Jhalmuri is a kind of dish जिसे South India में, especially Maharashtra में भेलपुरी कहते हैं. So that is what it is happening. मतलब nothing serious. This was just a photo of कि हाँ मोदी जी कितने normal है. So that's it. That's it. This is all about election. Right. चलो, let's discuss on the today's newspaper. है ना. सबसे पहले तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इन जो वो है क्या कहना चाहिए रिमूवल, इस पे डिस्कशन इज गोइंग ऑन. There is a legal questioning regarding the Judge Inquiry Act 1978 and Article 124(5) of the Constitution relevant to Justice Yashwant Verma. Remember this particular guy? Even Goswami is Harvard. अब तुम्हें पता है ना, ऐसे लोगों के नाम लूंगा ये पीछे पड़ जाते हैं. तुम समझते नहीं हो. वी आर टॉकिंग अबाउट आवर फ्रेंड, है ना. दैट्स इट. हमारा एक दोस्त है दक्ष का, मेरा दीपक गोस्वामी. वी आर टॉकिंग अबाउट इट. लेट्स नॉट डिस्कस दिस. ठीक है. देन आज के न्यूज़पेपर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात की गई. ओनली कोड ऑफ बात की गई है, मॉडल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की. यस, द इलेक्शन कमिश्नर इज
kind of busy while researching whether the PM's speech addressed to the nation, right, was a violation of Model Code of Conduct or not. Yes, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है आफ्टर 131st amendment bill got failed in the parliament, he came to address the nation. Right. In general, the address of the nation is something which is done in case of emergency or certain victories. This was the very first time जब एक हार के लिए, एक defeat के लिए our prime minister came to address the nation, and then he started blaming opposition. Right. Yes. So what exactly happened? Doordarshan, that TV channel in which he came live at 8:30 p.m. and he started blaming opposition that they are anti-women and that they are the reason why women reservation is not passed, right? And some other particular thing, right? And this was something that is considered as model code of conduct violation. So what exactly is model code of conduct? हम उसकी बात करें तो ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम जब से आचार संहिता राइट लागू होती है तब से लेके इलेक्शन तक there is a model code of conduct that every party and every party leader, every election candidate has to follow. They cannot violate those code of conducts. For example, there are certain example they cannot use liquor to polarize vote. They cannot use money to polarize vote. They cannot use casteist or a religious slur or religious comment to polarize vote, and they cannot use machinery, right? Government machinery to vote or polarize vote against opposition. Srimati Indira Gandhi, during her time, she was accused of using the government machinery for her election. So this is also a violation of code of conduct. So the opposition parties have filled the notices, filled the complaint against Modi ji, our prime minister, that this was a violation of model code of conduct. Our election commission is still sleeping. No, 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 they are still working, right? And thinking about it, whether this is a violation of code of conduct or not. Yeah, right. The Congress party also moved a privilege notice against PM Modi following the defeat in the Constitution Amendment 131st bill. Right. तो ये बहुत सारी चीजें जो है चल रही हैं, but होना कुछ नहीं है. Yes, our friend, world's friend, she ये आदमी यूएपीए लगवा के ही मानेगा मेरे गेस. So नेशनल पॉलिटिक्स में यही चल रहा है. That is violation of model code of conduct. राइट. इंटरनेशनली अगर देखें तो हम डिस्कस करेंगे यूएसए ईरान का जो सीज फायर और पीस है. थोड़ा सा पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ फॉर नाउ. अपने न्यूज़पेपर में तो नहीं है. व्हेन आई सॉ द ट्वीट लाइक 5:30 अराउंड ट्विटर एंड बीबीसी आई रेफर्ड. तो अल जजीरा, बीबीसी एंड ट्विटर, एवरीबडी पीपल वर टॉकिंग अबाउट दैट Donald Trump has announced that the क्या कहना चाहिए सीज फायर has what we can say extended indefinitely. मतलब जो सीज फायर है वो एक्सटेंड हो गया है. थैंक गॉड देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ वॉर फॉर नाउ, because a day back Donald Trump was in some kind of sustainship and he was saying कि we will bomb Iran again if they are not coming on the table. So there is going to be a ceasefire for a longer period of time. There is not going to be a war. That clearly means we are not going to see a bit rise in the fuel prices, but there are countless debate media after the moral code of conduct. Isn't that violation too? That is also violation. But the problem is media personnel, whether our friend, our Harvard friend, or other people, they don't belong to any political party officially. Right? So जब वो officially किसी political party से belong नहीं करते, तो they can brag about anything. तो वो चीज हो भी रही है. You can understand it. Politics में narrative control करना एक बहुत important चीज होती है. आई मीन व्हेन द दिस पर्टिकुलर, थोड़ा सा अगर पॉलिटिक्स की बात करना चाहो, है ना, तो पॉलिटिक्स के लिए मैं तुम्हें सिंपली एक बात बता देता हूँ दैट ऑपोजिशन पार्टीज वांटेड टू हैव डिस्कशन ऑन दिस 131st amendment bill आफ्टर इलेक्शन, right? But 23rd of April, that is tomorrow, we are going to see the first phase of voting in West Bengal and the voting in Tamil Nadu. And these are the both the states are run by the opposition parties, regional party though, but opposition parties, and they bought the bill in between the election.
They were well aware about the numbers that the opposition is not going to support it. Then, when the bill went down, they started projecting it as the TMC, the current government in the West Bengal, and DMK, the current government in Tamil Nadu. They are anti-women, right? So ये एक political narrative का काम था, and the media did a very well job for the current political situation. So India, US Iran conflict जो है that is going on. Different news is Japan military shift. That is what expert is calling it. है ना, मैंने अभी उसके बारे में थोड़ा सा और सर्च करने की कोशिश की, then I got to know that's here. Japan open its door to the global weapon market. यस, कल जापान ने एक पर्टिकुलर पुराना क्या कहना चाहिए बैन ऑन लीथल वेपन एक्सपोर्ट जो था, राइट, उसको चेंज कर दिया. नाउ दे आर लाइक कि हाँ भैया, वी कैन वर्क ऑन सेवरल डिफरेंट थिंग. दे सेड कि नॉर्थ कोरिया इज व्हाट वी कैन से going ahead and lots of different things. So Japanese military shift has been seen, है ना. And then उसके अलावा इकोनॉमी में अगर बात करें, तो इकोनॉमी लाइक देयर नो बडी इन आवर कंट्री इज टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉर, जिसको हमें बात करना चाहिए. देयर आर सेवरल पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल दीस डेज दैट आर सर्कुलेटिंग how the US, what we can say, singularity sanctions are affecting India, how the war is affecting India. Nobody's talking about the what we can say byproduct action जो होने वाले हैं. For example, we have lost 40% of our fertilizer production. तो प्रॉब्लम ये होगी कि भाई सब प्राइस राइज होंगे. The affordability of fertilizer will be less. That clearly means कि food yielding will be less. Right? अगर food yielding will be less, the price of the food will arise. The availability of the food for the common people who doesn't have large resources, उनके लिए कम हो जाएगी. अभी इलेक्शन के बाद देयर आर एक्सपर्ट, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है जो सीधे तौर पे कह रही है कि आफ्टर 29th ऑफ अप्रैल द प्राइस ऑफ द फ्यूल इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट. और वो अप्रोक्सीमेट 20 रुपीज जो है वो पेट्रोल पे होगी और 40 रुपीज डीजल पे होने वाली. If this is going to happen, vegetable, fruits, and other particular daily use जो particular groceries होती हैं, they are going to get costly. Inflation is going to rise exponentially. Then come another industrial disaster. 13 killed in an explosion at firework unit set up in Trishur in Puram festival. So कल तमिलनाडु वाले अपन ने एक्सीडेंट की बात की थी. आज हम त्रिशूर वाले एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं. तो जो इंडस्ट्रियल वो है, disasters कह सकते हो तुम इसे now, that are continuing and damaging India for like unnecessary reasons. So ये जो चीज है इस पे अभी भी कोई बात नहीं कर रहा. Nobody is addressing where there is like hazardous condition or there is a dangerous zone in any industry. So वहाँ पे क्या क्या चीज होनी चाहिए. So 13 killed, right? 5 seriously injured. That is what they are saying, right? अभी तक क्या हुआ है, why this particular explosion happened, इस पे डिबेट चल रही है. बट दिस इज समथिंग जो हो रहा है ना. चलो, अब हम बात कर लेते हैं यूएस ईरान सीज फायर की कि क्या उस पे थोड़ा सा वो चल रहा है. ओके, व्हाट इज गोइंग ऑन. सबसे पहले दो चीजें करते हैं कि व्हाट वाज द टॉक दैट वाज गोइंग ऑन. सो एट वन पर्टिकुलर पॉइंट यूएस की तरफ से ऐसा लग रहा था कि जो जीडी वैंस है, right, जो वाइस प्रेसिडेंट है, दे आर सपोज टू रीच एट इस्लामाबाद. बट फॉर नाउ दैट लुक्स लाइक कि नहीं, अभी नहीं पहुंच पाएंगे बिकॉज ईरान इज नॉट एट ऑल रेडी टू सिट ऑन द टेबल अगेन, right. Iran said no until and unless all the condition of ceasefire is being fulfilled, हम टेबल पे नहीं बैठेंगे. Those conditions include the complete opening of Hormuz. Those conditions include the complete ceasefire, right? Those condition includes कि भैया हम बात करेंगे तो लॉजिकल चीजों में बात करेंगे. अब ईरान ने भी ये पर्टिकुलर पॉइंट निकाल दिया है आईआरजीसी की तरफ से. देयर इज अ कंसर्न जो सीधे तौर पे आया है कि यूएस के प्रेसिडेंट जो है उनके ट्रुथ सोशल पे जो होता है, करेक्ट भाई, थोड़ा सा आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. The guy named its social media platform as Truth Social, and all he is posting is lies. I don't know.
खैर, तो उन्होंने बोला कि जो भी चीजें ट्रुथ सोशल में बोली जाती हैं और जो भी चीजें एक्शन में आती हैं, दे आर सपोज टू बी सिमिलर. You cannot manipulate markets simultaneously when you are talking about peace. There is no peace yet, right? The Iranian counterpart also mentioned about it. If there is going to be a talk, even at that time, the fingers are going to be on the trigger. राइट. बहुत सारी वीडियोस रिलीज किए गए हैं जिसमें मिसाइल प्रोडक्शन, ड्रोन प्रोडक्शन किस तरीके से बढ़ा है, किस तरीके से चीजें एनहांस हुई हैं. इन सारी चीजों के बारे में मेंशन भी किया है ईरानियन जो मीडिया है, आईआरजीसी की जो वीडियोस है. तो बोथ द साइड देयर वाज सर्टेन पर्टिकुलर क्रिटिकल डिस्कशन, क्रिटिकल व्हाट वी कैन से ट्विटर तू मैं, राइट. अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड्स कि वी कैन बॉम्ब एट एनी मोमेंट if they are not ready to sit on the table. And after that, this was the morning time, huh? ट्रम्प को मॉर्निंग सिकनेस थी, उसने बीबी गोलियां ली थी, तो उसने बोला कि हम बॉम्ब कर देंगे. बाय द टाइम ऑफ इवनिंग दिस सेज कि हम इंडेफिनिट सीज फायर करेंगे. ईरान ऑन द अदर हाफ, ईरान में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रही है. अब्बास अरागची, राइट, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, जब से पीस टॉक हुई है उसके बाद से फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान जो है ना, उनका क्या कहना चाहिए, ट्वीट्स, डायरेक्ट ट्वीट्स आना, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आना बंद हो गए हैं. एंड ऑल द ट्वीट्स, ऑल द स्टेटमेंट फ्रॉम अब्बास अरागची जो है वो आईआरजीसी के ऑफिशियल हैंडल से आ रहे हैं. तो फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, द स्पीकर एंड आईआरजीसी, इन सब के बीच में ऐसा लग रहा है कि कुछ पर्टिकुलर डिबेट जो है, और देयर इज अ मेंटेन ऑफ सीक्रेसी, राइट, जो दे आर ट्राइंग टू मेंटेन, जिससे स्टेटमेंट जो है डिफरेंट ना रहे. So there are chances कि either they are having certain dispute over the peace talk or they are maintaining the secure. Where you get the newspaper? Can you tell me please? I will. Tagu, actually, ये सब्सक्रिप्शन है, मतलब इंटरनेशनल एडिशन के लिए हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं एंड वहां से हमें न्यूज़पेपर मिलता है, राइट. वी कैन डाउनलोड इट, तो तुम भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो द हिंदू का. तो इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन गैप है, और दे आर जस्ट मेंटेनिंग द सीक्रेसी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ द स्टेटमेंट, जिससे किसी से भी कुछ भी गलत स्टेटमेंट ना निकले. सो इन दोनों चीजों पे बात चल रही है. एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि मोस्ट प्रोबेबली आईआरजीसी ट्राइंग टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी. तो ये पूरा कल का सिनेरियो था एंड सडनली द थिंग्स चेंजेस. चलो, अब मैं बात कर लेता हूँ जो सबसे पहले अल जजीरा ने कोट किया है. अल जजीरा ने ये कोट किया है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज indefinitely extended the ceasefire with Iran, which was originally set to expire on Wednesday evening, April 2022-2026. This decision followed a request from Pakistani mediator to allow more time for diplomatic effort in Islamabad. So, again, Trump was not in the condition where he can actually attack on Iran again. That's a fact, right? क्योंकि ये अभी yesterday and day before yesterday, the ex-military, ex-cops, they were actually protesting against Donald Trump for war against Iran, for the demolition against Palestinian in the Gaza. So they were protesting against Israel as well. And there are people who are not at all welcoming Trump's decision. For now, ट्रम्प की जो पॉपुलैरिटी है वो 37, सॉरी, अप्रूवल रेट 37% से कम हो गई है. And majority of them are not talking about economic impact of this war, but the war itself. कि why you attacked Iran on like just because Israel wanted to attack. तो फॉरेन पॉलिसी को लेके ज्यादा गुस्सा है. डोनाल्ड ट्रम्प इज हैविंग अ मिड टर्म इलेक्शन वेरी सून, एंड दिस टाइम लाइक दिस लो अप्रूवल रेटिंग, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प एट ऑल. तो ट्रम्प के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था सीज फायर को एक्सटेंड करने के लिए के अलावा. सो दे डिसाइडेड कि व्हाई नॉट नेम द पाकिस्तान, right, give the credit to the Pakistan. So they said the Pakistani mediators requested Trump to extend the ceasefire indefinitely so that we can get more time to put diplomatic effort to for the peace. ये अल जजीरा ने कोट किया. अल जजीरा ने अपने आर्टिकल में ये भी लिखा है कि भाई साहब, ये ट्रम्प के पास इकलौता ऑप्शन था, राइट. सो अभी हम बात कर रहे हैं. अच्छा, ईरान की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है बाय द टाइम 6:37, है ना, जब तक मैंने ट्विटर चेक किया था. तो मैं ईरान की तरफ से कोई स्टेटमेंट वो नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, जो करंट स्टेटस है, नेगोशिएशन है, हम उसकी बात कर लेते हैं, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडेफिनिट एक्सटेंशन जो है सीज फायर का हो चुका है.
तो सीज फायर जो है वो एक्सटेंडेड है फॉर indefinite टाइम. Trump announced via the Truth Social that he has directed the military to hold off the planned attack until the Tehran submits a unified proposal to end the conflict. मैंने तुम्हें बोला ना कि he is also using the same language that Abbas Araghchi, Pezeshkian, right, या IRGC इनके बीच में coordination नहीं है. So until the Iran is submitting a unified proposal to end the conflict, तब तक के लिए हमने cease fire extend कर दिया. ये अमेरिकन वो है. उन्होंने ये भी बोला कि जो ब्लॉकेड हुआ है, राइट, वो कंटिन्यू रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का. So despite the truce extension, the naval blockade of Iranian ports and Strait of Hormuz remain in the place. And you are well aware how effective is that blockade. राइट. कल जो वो थे कहना चाहिए कंटेनर ट्रेसर्स थे, उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स निकाली थी जिसमें देर आर रेगुलर शिप कमिंग इन एंड आउट. Yes, there are certain incident of attacking ships by the gunboats and some other thing from the Iran, but containers are coming out from that strait. So blockade continue है. And the third good thing, मतलब this is the sign कि ईरान जो है टेबल पे बैठ सकता है, is लेबनान. राइट. लेबनान का भी सीज फायर जो है वो कंटिन्यू रहने वाला है. एंड द लास्ट वन इज जिसमें करंट स्टेटस में अगर बात करें तो बीबीसी ने खुद लिखा हुआ है टॉक इन लिम्बो. यस, बीबीसी का कोट ही है ये, मैं तुम्हें सुना देता हूँ. द वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस प्लान्ड अ ट्रिप टू पाकिस्तान फॉर अ सेकेंड राउंड ऑफ पीस टॉक हैव बीन पोस्टपोन, right, or put on hold to internal division within Iran, the lack of formal confirmation of attendance from the Tehran. So उनका ये कहना है कि the talk is still in limbo. अभी जेडी वैंस जाने वाले थे बट वो होल्ड या पोस्टपोन हो चुका है क्योंकि ईरान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है. राइट. Blockade is so effective. Blockade is so effective that Chacha Trump is getting all the oil from Strait of Hormuz, no one else. खैर छोड़ो. द इरानियन मीडिया, अब मैं तुम रिएक्शंस की बात कर दूं तो मुझे अब तक ऑफिशियल ट्वीट तो पेजेश्किन या किसी की तरफ से नहीं मिला है. बट एक सीनियर एडवाइजर जो है, राइट, उनकी तरफ से एक पर्टिकुलर वो आया कि ईरान ने डिसमिस किया हुआ है. सीनियर एडवाइजर टू ईरान पार्लियामेंट्री स्पीकर महदी मोहम्मदी stated that the extension means nothing and characterized the continuing US blockade as cease no different from bombardment. तो उन्होंने सीधे तौर पे वही आई टोल्ड यू ना कि जब तक वो ब्लॉकेट नहीं हटेगा तब तक ईरान टेबल पे नहीं आने वाला. ईरान इस समय थोड़ा सा आगे है अमेरिकन कंसर्न से. सो उन्होंने सीधे तौर पे बोल दिया कि ये जो है ये बॉम्बार्डमेंट जैसे ही है, तो जब तक ब्लॉकेट नहीं हटेगा तब तक तो हम बात नहीं करने वाले. राइट. ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कल जो है अब्बास अरागची, उनकी तरफ से ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आया था, यूएस ब्लॉकेड इज एन एक्ट ऑफ वॉर एंड वायलेशन ऑफ सीज फायर. Right. Iran also condemned the recent US seizure of an Iranian flagged cargo ship as piracy. राइट. तो अब्बास अरागची ने कल ही कह दिया था कि भाई हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. एंड ईरानियन कमांडर आईआरजीसी की तरफ से जो आया था, दे हैव वार्नड दैट दे मे टारगेट रीजनल ऑयल फैसिलिटी इफ वॉर रिज्यूम्स और इफ द नेबर्स कंट्री असिस्ट द यूएस अटैक. तो ये कल उन्होंने अटैक कर दिया था, उन्होंने बता दिया था कि इफ समथिंग हैपेंड आफ्टर लाइक सीजफायर एंड, तो हम रीजनल ऑयल फैसिलिटीज पे बहुत तगड़ा अटैक करने वाले हैं. तो इसके कारण ये भी एक पर्टिकुलर रीजन है कि अरबियन कंट्रीज हैं जो यूएस एलाइज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, कतार, बहरीन, कुवैत, उन्होंने ये बात बोली होगी कि भाई सीज फायर एक्सटेंड करो. राइट. अगर मैं थोड़ा बहुत रीजनल इम्पैक्ट की बात करूं, आई गॉट दिस डेटा फ्रॉम वेबसाइट ना, कंटेनर ट्रेसर जो है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करूं तो मत पूछो, बहुत गंदी सिचुएशन है. द स्ट्रेटेजिक वाटरवे रिमेन्स इफेक्टिवली क्लोज्ड, causing global oil price surge and US petrol rise over 25% since the start of the war. Hormuz close है. यूएस में जो फ्यूल प्राइस है, गैस प्राइसेस को दे कॉल इट गैसोलीन, पेट्रोल को वो गैसोलीन बुलाते हैं, वो 25% बढ़ चुके हैं. राइट. एंड दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं. एयर स्पेस इज स्टिल क्या कहना चाहिए, थोड़ा प्रॉब्लम में है, बट देर आर स्मॉल अमाउंट ऑफ रीओपनिंग जिसको बुलाया जा रहा है बिकॉज ऑफ डिप्लोमेटिक वर्ल्ड.
Amidst the diplomatic pause, Iran Air is reportedly planning to resume the domestic flight operation starting from Wednesday after a 50 days closure. तो अभी ये particular situation चल रही है, right? अल जजीरा ने एक चीज और रिपोर्ट की है जो आपको जानना चाहिए, वो ये है कि देर आर चांसेस दैट इफ दिस थिंग गोज वेल, राइट, इफ अमेरिकन्स आर रेडी टू पेंड अ बिट, तो ये पीस टॉक जो है कंक्लूड हो सकती है, एंड दैट कैन एक्चुअली लास्ट लॉन्ग. सो अगर ऐसा होता है तो काफी चीजें हो सकती हैं, बट उसके जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हुए हैं उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा. देर इज अ रिपोर्ट जो रिसर्च स्टडीज कह रही है वो ये है कि अप्रोक्सीमेट फॉर 2 years, राइट, दुनिया भर में जो नेगेटिव इम्पैक्ट आना था वो आ चुका है. फॉर एग्जांपल इंडिया की अगर बात करें तो 7.4 एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ रेट थी जीडीपी को उसको 6 करना पड़ रहा है बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग फ्यूल. सो एफडीआई का जो पर्टिकुलर फ्लो है वो कमजोर होगा. इफ द कंट्री इज नॉट सिक्योर एनर्जी वाइज, व्हाई द फॉरेन इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट इन इंडिया, right? The inflation is going to rise, the fuel price is going to rise, and there are going to be what we can say cut in production in metallurgical industry क्योंकि सल्फर नहीं आ रहा है. Cut in the what we can say production in the industries which are related to polymers क्योंकि वहां से polymers नहीं आ रहे हैं. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ऑयल और फ्यूल की बात यहाँ पे होनी चाहिए, बट देर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज जो अलग अलग तरीके से अफेक्ट होने वाली है. सो दे हैव ऑलरेडी अफेक्टेड लाइक दैट 50 days war, 50 days blockade of Iran's Strait of Hormuz, they have already impacted our economy for 2 years. अगर इस साल मतलब जिस तरीके से शॉर्टेज हुई है फर्टिलाइजर की, 2 to 3 क्रॉपिंग सीजन जो है उसमें शॉर्टेज देखने को मिलेगी रेगुलरली. दैट क्लियरली मीन्स कि फॉर 1 to 1.5 years वी आर नॉट गोइंग टू सी अ प्रॉपर यील्ड ऑफ प्रोडक्शन. सो अगर प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगा एंड लोकल पब्लिक को फीड करने पे लगाएंगे तो एक्सपोर्ट कमजोर होगा. अगर एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो लोकल फीडिंग कमजोर होगी. देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम जो हो रही है. There are countries which are talking about it, but in our country there is no discussion, right? Everybody is eating झाल मुड़ी. So problem है ये issue है जो हमें थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए. So that was the thing जो हमें ईरान यूएस सीज फायर में अपडेट जाननी थी. I'll get a video on how the bilateral impact, sorry, byproduct impact जो है इकोनॉमी में इस वॉर के हो रहे हैं, जिससे तुम्हें थोड़ा सा और क्लैरिटी मिले, right? Let's discuss something which nobody is discuss. Right? Yes, Manipur issue. 3 years. Right? That has been 3 years. Yeah, nobody is discussing, so we should discuss about it. क्योंकि ये सच में ऐसा है जो यूथ को जानना जरूरी है. So fresh violence have erupted in Manipur following a bomb and a rocket attack in Trungalboi, right? That is a Vishnupur district in the April 7th, which killed 2 children. This incident has triggered widespread protest, leading to last at least 4 deaths and multiple injuries until April 2020, April 21, 2026. So 7th of April को, I mean, why I'm writing larger, क्योंकि ये तुम्हें थोड़ा सा जानने की जरूरत है. मणिपुर इज आवर बॉर्डर स्टेट, और 7th of April को बॉम्ब अटैक हुए हैं एंड रॉकेट फायर किए गए हैं. दिस इज नॉट सम वेपन जो रेगुलर ट्राइबल पीपल यूज करते हैं. दिस इज समथिंग जिसमें आपको सोचने की जरूरत होती है कि हाउ these people are getting rockets, how these people are getting bombs, right? They have lifted armory when the violence started 3 years back, but they are now having rockets and bombs. That means situation is getting critical. ओके, अब मैं थोड़ा सा रीसेंट जो पर्टिकुलर वो है सिक्योरिटी एंड सोशल इम्पैक्ट्स हैं, मैं उनकी बात कर लेता हूँ. सो आई कलेक्टेड इट विद द डिफरेंट डिफरेंट न्यूज वेबसाइट्स जिन्होंने रिपोर्ट किया है उनकी बात है. मेन स्ट्रीम मीडिया इज नॉट टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज इट्स नॉट एट ऑल टीआरपी वर्दी, राइट? सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो प्रोटेस्ट है वो काफी ज्यादा वाइड हो रही है. Anger over the lack of arrest for the recent killing has led to massive demonstration in Imphal Valley. On April 20th, security forces uses a tear gas, stun grenades to disperse the crowd attempting to storm the political residence.
सो प्रोटेस्ट इस लेवल पे चली गई है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने टीयर गैस और स्टन गन जो है जैसी चीजें जो है वो यूज करना शुरू की, स्टन ग्रेनेड जैसी चीजें यूज करना शुरू कर दी। एंड दैट इज व्हाट आफ्टर सस्पेंडिंग द गवर्नमेंट, after electing a new chief minister and deputy chief minister, right? But the situation is not at all in control. Reason behind this is the social divide that is being created. Hmm. वहां भी करते हैं, इस पे भी बात करते हैं, पहले एक एक करके टॉपिक में रहता है। सो द प्रॉब्लम इज दिस कि अगर उसमें कुछ बेसिक इम्पैक्ट हो रहा होता तो ये प्रोटेस्ट और ये वायलेंस फ्रेशली इरप नहीं होता, राइट? सो जो कैजुअलिटीज हैं, अगर उनकी रिपोर्टिंग की जाए जो द हिंदू ने खुद करी है 2 दिन पहले, तो उसमें उन्होंने किया कि बियॉन्ड 2 चिल्ड्रन रिसेंट विक्टिम्स इंक्लूड अ बीएसएफ जवान एंड अ रिटायर्ड सोल्जर इन उखरुल, right? Report indicates that clashes between Naga and Kuki group in the Senapati district have intensified the tension. So abhi Meitei Kuki the, now Kuki and Nagas are also involving, right? So technically Manipur में जो social divide है वो काफी ज्यादा strong होने लगा है, right? अब उसके कारण what exactly administration is doing? Administration is putting curfew plus internet ban. Yes. Indefinite curfew remain in effect across the several valley districts. The Manipur government extended the suspension of mobile internet data services VPN access through mid-April to curb the spread of rumors. Right. So internet agar band hai, that clearly means the newses are not coming properly, the videos are not coming properly, but still there are reporters, there are journalists who are reporting it. So it's a good thing. There is a civil shutdown जो हमें देखने को मिल रहा है, right? A statewide state shutdown called by the civil society groups has severely disrupted daily life, closing markets, school, public transport across both the hilly areas and valley regions. So technically, this particular state, जिसको अब थोड़ा normalize होना चाहिए था, it's again in a kind of lockdown shutdown situation, जहाँ पे उन्हें स्कूल और अदर पर्टिकुलर पब्लिक फैसिलिटी जो है उनका यूज करने से रोका जाने लगा, राइट? तो ये अभी उसकी करंट स्टेटस। टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल एंड लीगल इशू स्टेटस अगर मैं बात करूं कि मणिपुर में क्या चल रहा है। सो गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने 4 फरवरी को आई थे, हाँ, प्रेसिडेंट रूल जो है हटा था। एंड यमनम सिंह जो थे, यमनम खेमचंद सिंह, ही वाज शोन एज अ चीफ मिनिस्टर, राइट? उन्होंने सीधे तौर पे बोला है कि वी आर गोइंग टू हैव एनआईए इन्वेस्टिगेशन ऑन it. So the NIA is currently investigating the Ukrul ambush through access of evidence remain limited due to the unstable security situation. So NIA अपना काम करने की कोशिश कर रही है बट वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं, राइट? ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो चल ही रही है। मई 2023, राइट, यहां से वॉयलेंस शुरू हुआ था। Kidding. So what exactly happened? Kukis and Meiteis, they were two major tribes. Meiteis were a kind of having larger numbers. उनको जब reservation देने की बात की गई, तो Kukis and Meiteis they started protesting against each other. The violence erupted, and since May 2023, this is going to be the April 2023 ending. Clearly, there are 3 years सबसे मणिपुर stable रहा ही नहीं है, right? And उसके बारे में बात कितनी हुई है, you know very well. So अगर मैं मई 2023 से बात करूं तो रिपोर्टेडली देयर आर 260 डेथ, राइट? प्लस 60,000 जो है वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन है, आईडीपीस। सो 260 डेथ जो है वो रिपोर्टेड है। कितने हैं तुम्हें पता होना चाहिए, राइट? एंड 60,000 से ज्यादा जो है वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दैट इंडिया इज सीइंग इन द मॉडर्न 21st century, right? There are advisory that is be going on, all non-essential travel मना कर दिए गए हैं। अथॉरिटीज जो हैं और लोकल ऑफिशियल्स जो हैं वो सोशल मीडिया मॉनिटर कर रहे हैं, कर्फ्यू चेंज हो रहे हैं, मेंटेनिंग हाई सिचुएशनल अवेयरनेस नियर द प्रोटेस्ट साइड, a lot is going on, right? Problem is कि nobody is talking about it. Administration is not taking it seriously.
अगर ऐसा होता तो ये चीजें नहीं होती. सो दैट इज व्हाट अपडेट ऑन द मणिपुर. राइट. दीज वर द टू मेजर इश्यूज टू डिस्कस. इलेक्शन जो है वो होने ही वाले हैं, तो इलेक्शन के बारे में डिस्कशन तो मीडिया भी कर रहा है. वी कैन डिस्कस दीज थिंग. राइट. चलो, सो थोड़ा सा अब वो कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं बिफोर आई लीव फॉर फिजियोथेरेपी. So Congress moves frivolous motion against Modi ji for his speech. Uh, this is really scary, to be honest. This is scary. It's not about the violence that is being erupted. It's the ignorance from the government that is more scary. मतलब अगर 3 साल से कोई स्टेट जो है वो स्टेबल नहीं है, तो इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ होम मिनिस्ट्री एंड करंट गवर्नमेंट. राइट. और ये तब हो रहा है व्हेन द गवर्नमेंट इन द स्टेट एंड द गवर्नमेंट एट सेंट्रल बिलोंग टू द सेम पार्टी. राइट. तो ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है. मतलब आई लाइक अमित शाह फॉर हिज पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड पॉलिसीज, बट आई थिंक ही इज फेलिंग एज अ होम मिनिस्टर. whether that is Bangladeshi immigrant crisis ho, or whether that is Manipur ho, whether that is divide between South and North ho, whether that is divide of between the people based on religion ho. So political understanding, political वो तो अच्छा है, right? But ठीक है. And a reminder, there is still a strike in Ladakh. Don't talk about Ladakh, Daksh. नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी एनएसए लग सकता है. खैर, let's talk about it. Manipur boils on boil as the Kukis and Naga people clashes. Right, अभी the Kuki and Meiteis were involved. Now they are involved. Right, US Iran talks in doubt. Truce expiring today. We have already had this update कि अब क्या क्या condition बन रही हैं. Uh, it's not about shutting the whole state. If there is a problem, you should address it ना. What are the level of talks? क्या किसी ने talks arrange करी कुकीज मैतीज एंड नागास के बीच में? क्या किसी ने उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बात की कि क्या वो चाह रहे हैं? Is there anything? This is the situation. This is the solution we want now. क्या ठीक है? Let's talk about it. Japan open its door to the global weapon market. ये हमने डिस्कस कर लिया कि चाचा लोग अब बहुत सारा आर्म बिल्ड करेंगे और बाहर भी भेजेंगे और वहां से इंपोर्ट भी करेंगे. 13 killed in explosion in the firework unit in Trishul in Kerala. Right. Campaigning for Tamil Nadu polls in Bengal's first phase ends. Yes, कल इलेक्शन में वोटिंग है. राइट. सो तमिलनाडु में तो पूरी वोटिंग एक साथ ही हो जाएगी. सो तमिलनाडु के पोल के लिए कैंपेनिंग खत्म हो चुकी है. बंगाल के फर्स्ट फेज के लिए कैंपेनिंग हो चुकी है खत्म. सेकंड फेज के लिए कैंपेनिंग, जहां पे सेकंड फेजेस में इलेक्शन होंगे, राइट, आई गेस 29 अप्रैल को वहां पे कैंपेनिंग चालू है. बाकी अदर जगहों पे कैंपेनिंग बंद हो चुकी है. इलेक्शन मित्रों, देर आर पीपल हु आर इलेक्शन पगलू. हाँ, कल हुआ क्या ठीक है. बीजेपी सीक्स एक्शन, ईसी एक्शन अगेंस्ट द खरगे ऑन द रिमार्क ऑन द पीएम. यस. मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने स्टेटमेंट में पीएम मोदी को टेररिस्ट जैसा रिमार्क दे दिया था. एंड बीजेपी इज सेइंग कि भैया दिस इज द वॉल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से क्या किया हुआ है, कंप्लेन करी हुई है. टूरिस्ट रिटर्न टू पहलगाम, होटल ऑफर डिस्काउंट. ओके, दिस इज अ गुड न्यूज कि जो पहलगाम अटैक 1 साल पहले हमने देखा था, राइट, उसको मुंह तोड़ जवाब देते हुए हमारे टूरिस्ट जो है वो पहलगाम में वापस गए. Right, there was a simple thing, right? People are actually not afraid of terrorists or terrorism, right? These people are coming India just to get killed, right? So मतलब अब पहलगाम वापस वो होने लगा. थोड़ा सा सिक्योरिटी वगैरह जो है बढ़ाई गई हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो चेंज हुई हैं. बट हाँ, अच्छी चीज ये है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ दीज थिंग. और फिर हम अपने बेटे से क्या ही अफ्रेड हो. बेटा बीच बीच में थोड़ी हरकतें कर देता है, बट बेटा बेटा है ना. किसी दिन भी ऐसा मौका मिला तो चट्ट से पिताजी चटकाएंगे, वो काम हो जाएगा. गजवाए हिंद कॉन्स्पिरेसी, गुजरात एटीएस अरेस्टेड 2 men. भाविक, एक्चुअली जापान कैन डू दिस. Japanese infrastructure for manufacturing is something जो extensively great है. Japan and Germany both can do it. China is a manufacturing hub. तुम्हें एक secret बताता हूँ, but the manufacturing machinery China bought.
राइट, दैट वो फ्रॉम जापान एंड जर्मनी। सो उनके बेसिस पे हुआ है। बॉश वगैरह ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने ये मशीनरी बना के दी है चाइना को, तो दे कैन डू इट, राइट। Okay, heated campaign end with the hectic note on the party's street charges. Right, ये चलेगा, ये इलेक्शन है। बीजेपी लीडर टक्स into the fish sent message ahead of poll. कल मंगलवार को अनुराग ठाकुर जो थे वो मछली खा रहे थे। These were the same people who were actually telling that मंगलवार को नॉन वेज शॉप्स बंद होना चाहिए। Okay, Shravan Kumar takes over the legislature party leader as the JDU. Yes, एक टाइम एमएलए हैं ये श्रवण कुमार, who was appointed as the leader of Janata Dal United after Nitish Kumar joined the Rajya Sabha and resigned as the CM, और सम्राट कुमार जो है वो नए सीएम बने, right? Yes. Notice issued again Papu Yadav for his remark involvement in politics. ये काफी कुछ हो रहा है, मतलब this notice was issued by the Women Commission of Bihar. Yes, there is a state women commission in Bihar which can talk about women, but they are now currently talking about taking a suo moto cognizance on the remark by the Papu Yadav, right? Manipur is also having a state women commission. मैं सिर्फ बता रहा था, तुम्हें पता होना चाहिए। Haryana also had a state women commission when the female wrestlers were protesting. मैं सिर्फ बता रहा हूँ ना। Okay. As several times we have discussed कि इंडिया जो है उसे यूएस के यूनिलैटरल सैंक्शंस जो हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहिए। देयर शुड बी रेड लाइन अगेंस्ट इट। सुहासिनी हैदर जो द हिंदू के एडिटोरियल बोर्ड के हेड है, उन्होंने बहुत प्यारा एडिटोरियल लिखा हुआ है। मेक श्योर टू रीड इट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको मत मिस करना। इसमें उन्होंने बताया है कि क्या स्टांस होना चाहिए, क्या अलाइनमेंट और सैंक्शंस किस तरीके से डिफरेंट चीजें होती हैं, जो हिस्टोरिकल हमारी पॉलिसी मेकिंग रही है वो किस तरीके से डिफरेंट रही है। सो इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल। मेक श्योर टू रीड इट एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, क्योंकि मैंने पढ़ने के बाद बहुत कुछ सीखा है, राइट। Luster of bluster, India's economic metal will be on test after the phase of headwinds. Yes, मैंने तुम्हें जैसा बताया कि भैया इंडस्ट्री सेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे अफेक्ट हो रहे हैं, तो ये तो होना ही था। India's LPG crisis is a wake-up call. It cannot be ignored, right? Yes, definitely. Any current affairs news is good for MSCT as well. ठीक है? Okay. Election Commission of India on Prime Minister's violation of mode of conduct is troubling. अगर ट्रबल फील करेंगे तो, राइट। टिम कुक जा रहा है भाई। Yes, Tim Cook is resigning as Apple CEO. He will be an executive chairman, राइट। जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है हार्डवेयर इंजीनियरिंग के, दैट इज जॉन टिमूस, ऐसा कुछ नाम है, टेमिस, राइट। ही इज गोइंग टू टेक द सीईओ ऑफ द एप्पल। सो तुम्हारा फेवरेट फोन जो है वो, उसके चेयरमैन चेंज हो रहे हैं। मार्च ऑयल इंपोर्ट टिप ऑन वॉर, रशियन वॉल्यूम हिट रिकॉर्ड। यस, रशियन जो इंपोर्ट है, ऑयल इंपोर्ट है, दैट इज डबल, ऑलमोस्ट डबल। एट द एंड दोस्त दोस्त के काम आता है मित्रों। So, Israel jail for the soldiers that vandalized the statue of Jesus Christ in South Lebanon. हमने कल बात की थी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो वो थे, सोल्जर थे, वो एक सोल्जर था, उसने जीसस क्राइस्ट की स्टैचू वेंडलाइज की थी, तो उसको जेल हो गई है। Germany and Italy rejected push to suspend EU-Israel association deal. Right? US limits sharing of intelligence with the South Seoul on North Korea, report says. यस, अब चाचा ट्रम्प और साउथ कोरिया के बीच में भी लफड़े हो रहा है। जापान ओपन डोर्स टू ग्लोबल आर्म मार्केट, ये कर चुके हैं डिस्कस, तो प्रेडेटर लीडर सीक्स इम्पोज a new world order, says Amnesty International. Yes, Amnesty International, one of the major human rights advocate institution, उनकी तरफ से जो एग्नेस कालमर्ड हैं, उन्होंने सीधे तौर पे बोला है कि ट्रम्प, पुतिन, नेतन्याहू एंड अमंग अदर, right, they are pursued domination through destruction, suppression and violence on the massive scale.
she called them a predator leaders, correct? जो हम पहले से ही कह रहे हैं. Iran gives its fleet commander more power over Tehran-backed militia on Iraq. So ये तो होना था. They are decentralized the military action ना. Anybody कल का मैच जिसने देखा हो, मैंने तो कल का मैच देखा because I was resting. भाई अभिषेक शर्मा पागलों की तरह खेलता है. अगर वो आदमी रुक जाता है, राइट, तो फिर वो रुकता ही नहीं है. दैट इज व्हाट इज हैपन. बट हाँ, एक कंसर्न आया है ऑन द टेस्ट क्रिकेट कि जो लास्ट की 13 बॉल्स अभिषेक शर्मा ने खेली उसमें ही जस्ट गॉट 13 रन्स, राइट. व्हाइल आई रिमेम्बर द एरा ऑफ राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, चेतेश्वर पुजारा की यहाँ यहाँ पे 300 400 गेंदें खेल रहे हैं और 40 रन बना रहे हैं, राइट. सो वो जो टेस्ट क्रिकेट वाला वो होना चाहिए, क्या कहना चाहिए, दमदारी होनी चाहिए, वो आज के मॉडर्न प्लेयर्स में थोड़ा सा लैक कर रही है. सो मुझे ऐसा लगता है. कल संजय मांजरेकर ने भी इसमें कमेंट किया था. सो दिस वाज योर न्यूज़पेपर फॉर टुडे, राइट. टू मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने डिस्कस कर ली थी. मेक श्योर टू रीड दैट. सुहासिनी हैदर जी का जो एडिटोरियल था उसको मिस मत करना. इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. एंड दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. I'll see you in the next session. Till then, have a great day ahead. मजे करो. And make sure to stay motivated and stay positive for your studies. I'll see you in the next session. Till then, see you guys. Good day.